Today we'll be discussing a very important concept which will help you a lot in your sums as well as specifically for the subject of costing. तो अभी हम डिस्कस करते हैं ये एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की स्टोरी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल गेन जैसे कुछ नहीं होता है, इट्स जनरली नॉर्मल लॉस दैट वी हैव टू कंसिडर एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल लॉस देन एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल गेन। सी लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन कि ना मैं रेगुलर बेसिस पर 5 आइटम्स बेचती हूँ जो कि 20 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो 5 आइटम और हर एक आइटम 20 का है, दिस इज़ 20 ईच। और ऐसा होता है कि 2 आइटम तो ख़राब होने ही होने हैं, इट्स अ नॉर्मल लॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान के चलो कि मैं रोज़ 5 पेस्ट्रीज़ बेचती हूँ, उसमें से 2 पेस्ट्रीज़ ख़राब होनी ही होनी है। मे बी पेस्ट्री का शेल्फ़ लाइफ हाफ डे है, ठीक है। लेट्स कंसिडर कि आधा दिन तक ही पेस्ट्री ठीक रहती है, शाम के बाद ख़राब हो जाती है। तो इट्स लाइक कि मैंने आधा दिन ख़त्म होने से पहले, शाम ख़त्म होने से पहले जितनी पेस्ट्रीज़ बेच दी। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि 2 पेस्ट्रीज़ नॉर्मल लॉस है, तो इतना मान के चलो। अब ये नॉर्मल लॉस जो होता है ना, ये हमेशा हम लोग कस्टमर से रिकवर करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि भाई ये कुछ एक्स्ट्रा करने पर इनकर नहीं हुआ, ये मेरे बिज़नेस का ही बिहेवियर है, ठीक है। तो मैं अपने बिज़नेस से ही रिकवर करूँगी। जब मेरे बिज़नेस का ही बिहेवियर है तो मैं अपने बिज़नेस से ही रिकवर करूँगी, और बिज़नेस से रिकवर करना मतलब मैं अपने कस्टमर से रिकवर करूँगी। तो अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, ये एकदम परफेक्टली नॉर्मल सिचुएशन है, जहाँ पे 5 आइटम आप रोज़ बेचते हो लेकिन उसमें से 2 आइटम हमेशा लॉस हो जाता है। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 5 × 20 रुपीज़ 100 इज़ द टोटल कॉस्ट यू हैव इनकर्ड, ठीक है। अब अपन को पर पेस्ट्री पर यूनिट का कॉस्ट निकालना है, तो नीचे 5 आइटम्स का ये 100 रुपये कॉस्ट है। लेकिन चूँकि 2 आइटम हमेशा नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो हम लोग के आइटम्स कितने बचते हैं? 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पर पेस्ट्री का कॉस्ट निकालेंगे 100 रुपीज़ रख के न्यूमरेटर में और 3 पेस्ट्रीज़ रख के डिनोमिनेटर में। यानी कि पहले 5 पेस्ट्रीज़ का कॉस्ट 100 था, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो 3 पेस्ट्रीज़ का कॉस्ट 100 रुपीज़ है। सो व्हेन वी कैलकुलेट द प्राइस पर पेस्ट्री विल इंक्रीज एंड दिस इज़ 33.3. So basically when one pastry was just 20 rupees, because of the normal loss we reduced the quantity. Because of the normal loss we reduced the quantity, but we kept the total cost same, and hence as a result the price per pastry increased from 20 to 33.3. So basically in this situation we have recovered the normal loss from the customers. Now what happened is that one day 2 items were already in normal loss as always, but that day some accident happened and one pastry, there was an abnormal loss of that one pastry. You can take the reason, maybe because you were holding the pastries and suddenly accidentally you got diverted and you dropped one pastry. मतलब 2 पेस्ट्रीज़ का तो पहले से ही लॉस हो चुका था जो कि नॉर्मल था, बट one extra pastry because you dropped down, so it got destroyed. So that day you were only able to sell 2 items. In the normal situation you are able to sell 3 items, but in that particular day because of one pastry being accidentally destroyed, you were only able to sell 2 items. So now how we will take out the costing? So see, 5 × 20 means total cost incurred is rupees 100 is always. First make the scenario of a normal situation, कि if this situation could have been normal situation तो क्या होता कि 5 पेस्ट्रीज़ में से 2 पेस्ट्री ख़राब होके देयर कुड बी ओनली 3 पेस्ट्रीज़ लेफ्ट, ओके। देन 100/3, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? इट इज़ 33.33. बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि हम 33.33 की सिर्फ 2 ही पेस्ट्रीज़ बेच पाए एंड 1 पेस्ट्री वी कुडंट सेल. So this is the abnormal loss. That means we were only able to sell pastries for approximately 66.66 rupees and 33.33 was the abnormal loss. So we would like to form the formula. What is this? It is 1 pastry into normal cost of 33.33. Don't say that the normal cost is rupees 20. No, after reducing the normal loss we get this normal cost. So always remember, after reducing, this was the original cost, after reducing the normal loss in this way our original cost, or basically you can say a normal cost, is 33.33. So this is actually the original cost, but this is the normal cost after reducing
the normal loss. So 33.33 was the normal cost, but we were only able to sell 2 pastries and 1 pastry was accidentally destroyed, so this was the abnormal loss. So what could be the formula? 1 pastry into normal cost of 33.33, and what was 1 pastry? 1 pastry was abnormal loss. So always remember, whenever you are finding an abnormal loss, halaki there is no need to understand or mark up the formula. You have to understand the concept behind that. But even in case if I would like to give a formula, abnormal loss will be equal to abnormal loss quantity. In this case it was 1 pastry into normal cost per unit, not loss, it is normal cost per unit. So 33.33 was our normal cost, and abnormal loss quantity was 1 pastry. So this is another situation. Now there could be one situation like this. Let's discuss this situation. There were 5 items of 20 each and there was no normal loss that day. That means that day what happened was that the 2 pastries which used to get destroyed after the evening, or जो सड़ जाती थी, जो सेल हो जाती थी, that day you were able to sell all these 5 pastries in the half day. मतलब before evening you were able to sell all the pastries and there was no such normal loss. In this situation, what would happen is you have to consider the normal loss of 2 pastries. You have to consider, यानी कि for costing purposes आपको कॉस्टिंग उसी हिसाब से करनी है कि 100 आपका टोटल कॉस्ट था एंड पेस्ट्रीज आपकी कितनी थी 3, तो कितना हुआ टोटल 33.33. इसमें से व्हाट यू विल डू इज़ 33.33 इंटू 3 पेस्ट्रीज, तो जो आप हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में सेल करते थे ये तो होंगी, बट दीज 2 पेस्ट्रीज विच यू हैव sold today, these 2 pastries which you have sold today will be your abnormal gain. This is your normal gain, but this will be your abnormal gain because this is an extraordinary situation. This won't happen every day because on general basis you're only able to sell 3 pastries and 2 pastries are always destroyed just because they are not fresh after the evening, so you couldn't sell. But as this was a special situation, you were able to sell all the pastries, but costing तो हम जनरल तरीके से करेंगे. तो normal cost of the product is 33.33 only. This normal cost comes from original cost minus normal loss. So 3 pastries as usual you sold and this was your sale, but these 2 pastries which were specially or extraordinarily sold today, the gain or the price that you got in view of these 2 pastries will be treated as an abnormal gain. So I hope all the situations are clear of normal loss, abnormal loss, normal gain and abnormal gain, and these examples you could refer in case you get confused. I think these examples have cleared the situation very well.